Hello, I'm Abhishek, and in this video we are going to discuss set 5 of reasoning section of CAT 2019 slot 2 paper. Fine. So let's start with the question. This question was based on triangular graphs. A large store has only 3 departments: clothing, produce, and electronic. The following figure shows the percentage of revenue and cost from the 3 departments for the year 2016, 17, and 18. The dotted line depicts percentage levels. So, for example, in 2016, 50% of store's revenue came from its electronics department. तो एक बार चेक करते हैं जो आपको दे रखा है कि इन 2016 50% ऑफ द स्टोर्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू का कर्व चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 इज डिनोटेड बाय दिस ब्लू शेडेड लाइन। तो ब्लू लाइन में इलेक्ट्रॉनिक्स कहां पर आ रहा है? यहां पर। फाइन। नाउ दिस इनरमोस्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट 10% लेवल्स, सेकंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 20% लेवल, थर्ड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 30% लेवल एंड सो ऑन। So this is fifth number triangle. It represents 50% levels. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू है 50%. फाइन. 2016 में प्रोड्यूस की बात करते हैं तो प्रोड्यूस की वैल्यू इज 10, 20 and 30%. See, this blue dotted line is on third triangle. इधर वैल्यू कितनी होगी? 30%. Similarly, on clothing, the revenue generated from clothing was 20% only in 2016. फाइन. तो इस तरह से हमें इस ग्राफ को रीड करना है. 40% of its cost incurred was in produce department. एक बार produce department cost वाला ग्राफ देखते हैं. इसमें produce department की बात कर रहे हैं. 2016 में 40% cost were incurred from produce department. चेक करते हैं. 2016 is represented by this blue line. Blue line कहां पर आ रही है? यहाँ पर fourth triangle पे. Fourth triangle represents 40% level. तो जो वैल्यू आ जाएगी produce की 2016 that is 40%. Fine. Okay. So now moving to the further information that is given to us in this setup, profit is computed as revenue minus cost. So in general भी यही होता है कि profit is computed as revenue minus cost, and profit percentage is calculated as profit on cost price into 100. Fine. The stores the percentage profit for store in 2016 was 100%. The store's revenue doubled from 2016 to 17 and its cost doubled from 2016 to 18. There was no profit from electronics department in 2017. And last information is in 2018 the revenue from clothing department was same as the cost incurred in just give me a second cost incurred in the produce department. Fine. So ये सारी information हमें given है. Now what you need to do is you just need to pause the video, try solving this set. एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए. फाइन. ओके. सो मूविंग टू सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहले सेट को इजी करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज जो आपको ट्रायंगुलर ग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी थी आई फॉर्मड अ टेबल आउट ऑफ दैट. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल द वैल्यूज फॉर EC&P इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोथिंग एंड प्रोड्यूस डिपार्टमेंट फॉर 2016 इज 50, 20 and 30%. तो ये किस तरह से हमने नोट की एक बार देख लेते हैं. 2016 में रेवेन्यू वाला ग्राफ हम कंसीडर करें तो 2016 में रेवेन्यू वाले ग्राफ पे जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू इज 50%. दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाला पार्ट ना. यहाँ पर ये क्लोथिंग वाला पार्ट ब्लू लाइन देखे तो कहां पर आ रहा है? दिस इज ऑन 20% लेवल. एंड सिमिलरली प्रोड्यूस में ब्लू वाला लाइन व्हिच वाज फॉर ईयर 2016 यदि हम इसको चेक करते हैं तो इट इज कमिंग ऑन थर्ड ट्रायंगल दैट इज 30%. So the values for ECP respectively in year 2016 was 50, 20 and 30. So I have made a table out of that 50, 20 and 30. So it will make the question easy for us. हाँ, बार-बार हमको ट्रायंगल में चेक नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू को ग्राफ में नहीं करना पड़ेगा. Fine. Okay. So let's start the question. Now the percentage profit for store in 2016 was 100%. Now let us assume the revenue in 2016 was 100x rupees. Now the profit is 100%. Profit is 100% means revenue is double of cost. So cost must be 50x. देखिए cost 50x होगा तभी उसका 100% profit means जितना cost था उतना ही profit हुआ है. तो total revenue must be 100x. Fine. Now moving to further information. This information we have used. Second information. The store's revenue doubled from 2016 to 17. The revenue doubled from 2016 to 17. So revenue in 2017 must be 200x. Fine. And it cost double from 2016 to 18. Cost double from 16 to 18. So cost here must be 100x then.
डबल ऑफ द कॉस्ट इन 2016 ईयर. फाइन, तो इसको भी हमने यूज कर लिया है. इंफॉर्मेशन नंबर 3, there was no profit from electronics department in 2017. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं था. तो लेट अस अज्यूम कि जो टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की वो 100Y रही होगी. ये हमारा अजम्पशन है. अब कोई भी प्रॉफिट नहीं था, दैट मींस रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मस्ट बी इक्वल, तभी जीरो प्रॉफिट आएगा. तो इन 2017 the revenue from electronics department was 30%, 30% of 200x, and this must be equal to the cost, and cost is 40% of 100y. Now these two value must be equal because there was no profit from electronics department. तो इसको solve करते हैं, तो this will get cancelled out, this will get in 2 times, so y will come out to be 1.5x. Substituting the value of y as 1.5x, तो यहाँ पर 100y है, तो that will be 150x. अब ये भी x के टर्म्स में आ चुका है. Fine. Last, in 2018 the revenue from clothing department was same as the cost incurred in the produce department. तो हम assume कर लेते हैं कि जो total revenue था that was 100a. The revenue from clothing department must be 40% of 100a, that is 40a, and this must be equal to what? Cost in produce department. So cost in produce department is 50x. 50% of 100x, that is 50x. So the value of a from here comes out to be 1.25x. Now substituting the value of a over here, so the total revenue from 2018 was 125x. Now all these values are in terms of x only. Fine. So जब इस तरह से है, so let us move to first question. Okay, so question number 1. Question number 1 is, what was the percentage profit of the store in year 2018? We need to calculate the profit of the store in year 2018. So let me first remove this. Okay, so profit in 2018, so total revenue was 125x, cost was 100x, so profit was of 25x. If we need to calculate profit percent, we need to divide it by cost and then multiply it by 100. So the answer comes out to be 25%. So there was a profit of 25% in year 2018. Fine. I hope this must be clear to you. बहुत easy question था. Fine. So moving to next question. Let me remove this first. Okay. So moving to question number 2. Question number 2. What was the ratio of revenue generated from produce department in 2017? Produce department in 2017 to that in 2018. Revenue का ratio बताना है produce department का 2017 and 18 का. In 2017, the revenue from produce department is 40%, and 40% of what? 40% of 200x. In 2018, this value comes out to be 40% again, but then this time 40% of 125x. So this gets cancelled out. X से x भी cancel होता है, and 25 से cut करते हैं, तो this is 8 times and this is 5 times. So the answer is 8 to 5. Option A. Fine. Moving to question number 3. Okay, moving to question number 3. So question number, just give me a second. Question number 3. So question number 3 is, what percentage of total profit of the store in 2016 was from electronics department? 2016 में जो भी स्टोर का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से कितना स्टोर जो प्रॉफिट था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से था. 2016 की बात कर रहे हैं. टोटल प्रॉफिट कितना था? 50x. टोटल प्रॉफिट कितना था? 50x का था. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना? तो 50x का प्रॉफिट वाज देयर. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है? सी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू वाज 50x and cost was 30% of 50x, that is 15x. तो जो प्रॉफिट हुआ है that is equal to 35x. तो ये 35x 50x का कितना परसेंट होता है? इसको सॉल्व करते हैं तो we'll get the answer is 70%. So the correct answer to this question is 70%. This was type in वाला question. Answer is 70%. Moving to last question of this set, question number 4. Question number 4 क्या पूछा गया है? What was the approximate difference in the profit percentage of the store in 2017 and 18? Profit percentage का difference बताना है in 2017 and 18. See, profit in 2017 was of 50x over 150x. Total cost was 150x.
So the profit percentage from here comes out to be 33.33%. Total profit in year 2018 was of 25x over 100x. Cost was 100x only. So this is 25%. Now the difference in these two values comes out to be 8.33%. The correct answer is option first. Fine. I hope this solution is clear to you. Thank you.